Hello there, very good afternoon and welcome to Rajya Sabha TV's continuous coverage of counting day in the 5 states where of course the big story emerging is of course from Uttar Pradesh, where the BJP has seems to be of course going ahead for a landslide victory across Uttar Pradesh. And we have in fact got a statement from Mayawati as well, where she has in fact expressed she has expressed doubts over the way the EVMs have functioned, and she's in fact saying that it's impossible that the Muslim vote could have gone to the BJP. We'll talk about all of that in detail. I'm Tracy Shilshi, and joining me of course is Qurban Ali. Thanks Tracy. राज्यसभा टेलीविज़न पर इन चुनावों की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत 3/4 बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुमत की ओर अग्रसर है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर और गोवा के नतीजे काफ़ी दिलचस्प हैं और काफ़ी सुस्ती के साथ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 3 राज्यों में तस्वीर साफ होती जा रही है। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले इस वक्त की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बनबास खत्म, 3/4 बहुमत की ओर पार्टी। जनता ने समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को नकारा, मायावती को भारी झटका। उत्तराखंड में भी खिला कमल, बीजेपी 2/3 बहुमत के पार। हरिद्वार ग्रामीण से मुख्यमंत्री हरीश रावत हारे। पंजाब में कांग्रेस का परचम लहराया, सरकार बनना तय। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, अकाली दल गठबंधन को भारी नुकसान। और मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, गोवा में बराबरी का मुकाबला। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने गंवाई सीट। All right, taking this discussion forward, we are joined in studio by Umakant Lakhera, a senior journalist joining us in the panel here. We also have a political editor of Shah Time, Bilal Sabzwari, joining us, and also Paranjoy Guha Thakurta, who's the editor of the Economic and Political Weekly. Paranjoy, if I could start with you first, just taking on what Mayawati said just a few minutes back. You know, she was probably the only big leader who's in fact, at the moment come out and given out a statement after those results that are coming out in Uttar Pradesh. Definitely it's pretty disheartening if you think about the BSP voters and the party itself. The numbers that are in her favor, at least, it's quite minimal at least. But, the statement that she's come out with saying that, the EVMs seem to have malfunctioned. It seems that whatever vote may have gone has gone to the BJP. We'll come to that in a bit, but Digvijay Singh of the Congress speaking right now. Let's quickly cut across that. I think if you emerge as the single largest party, will you stay keen to form the government, and who are those smaller others that you're looking at to come along? Well, let all the results be out. We have called a meeting of all the MLAs who have won this evening at 6 p.m. in the PCC office, and then we shall, after discussion, take a call. Are you, or perhaps parties like the MGP, Sudhir Dhablekar, in some interviews has suggested that he has gone with the Congress in the past and wouldn't have an issue with going with the Congress again? The bottom line is that any political party outside BJP or independents or any other group which accepts the election promises made by the Congress party to the people of Goa, then we have no problem in forming a government with them. ये सारी चर्चा तो विधायक दल में ही होती है, AICC का कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन रीजनल पार्टीज आपके साथ जो आएंगी उनके अपनी कंडीशंस, जैसे बीजेपी कहती है कि उनके नेता सुधीर धावड़ेकर को सीएम बनना है। ऐसा है, कोई भी छोटा दल, अभी तो उनका केवल एक विधायक चुना है, धावड़ेकर जी के स्वयं भाई चुनाव हार गए हैं, तो अभी तो ये कहना बड़ा असंभव है। फिर भी एक
मोटे तौर पे एक प्रिंसिपल है कि शरीर तो पूंछ वो हिला सकता है, लेकिन पूंछ शरीर को नहीं हिला सकती। इसलिए छोटा दल का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावा करना हास्यास्पद है। पंजाब में आपको विजय हासिल हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में असफलता मिली है, तो इसको लेकर बीजेपी का जो दावा है कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश का साथ आना जनता को ज्यादा पसंद नहीं आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को इतना विशाल बहुमत मिलेगा, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने परिवर्तन का रास्ता चुना है और उन्होंने एक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। लेकिन एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूं, इस देश में भाजपा का मुकाबला कोई दूसरी रीजनल पार्टी नहीं कर सकती, केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और ये सभी रीजनल पार्टीज को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ही भाजपा और मोदी को रोक सकती है। 2019 के लिए अभी से कोई तैयारियां, फॉर्मूला या फ्रंट बनाने कांग्रेस यूपी के साथ जोड़ने के लिए? पहली बात तो फ्रंट के बाद में बात होगी, पहले तो कांग्रेस पार्टी को स्वयं अपने बारे में सोचकर कुछ बुनियादी निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू। सर्जरी और ऑपरेशन की कांग्रेस मांग कर रही है, राहुल जी बन जाए और सर्जरी ऑपरेशन हो जाए। मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि मोटे तौर पर हम लोगों को एक कांग्रेस को आज की परिस्थितियों में ढालने के लिए नया रास्ता चुनना चाहिए और नए रास्ता चुनने के लिए राहुल गांधी जी को विशेष तौर पर कुछ बुनियादी निर्णय लेने चाहिए। कैसे कांग्रेस को हम अपने सुधार के रास्ते पे ले जा सकें, कैसे हम लोग राज्यों में नई लीडरशिप खड़ी कर सकें, इसका हमें पूरा प्रयास होना चाहिए। जब भी नई लीडरशिप की बात होती है सवाल उठता है पुराने लोग छोड़ने तैयार हैं, नई लीडरशिप सब छोड़ने तैयार है। मैं कौन उस व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूं पुराना जो नहीं छोड़ना चाहता। राहुल गांधी के नेतृत्व में पहली बार। और इस वक्त हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से हैं और साथ ही टॉम वडक्कम कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, सबसे पहले तो बधाई कि आपकी पार्टी ने 2 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इसे आप क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत कहेंगे या मोदी जी की जीत कहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इसे मोदी जी की जीत बताया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बधाई दी। बधाई एक्चुअली उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को है जिन्होंने एक नेगेटिव पॉलिटिक्स को डिफीट किया, नहीं तो इतनी भारी जीत नहीं हो पाती। निश्चित ही उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है गुड गवर्नेंस का और एक नया विजन जो है डेवलपमेंट का, जिसके बारे में वो हमेशा बात कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है, लोगों ने देखा है कैसे सरकार काम कर रही है गरीबों तक पहुंचने की, और इसीलिए एक मैंडेट दिया है नेगेटिविज्म को डिफीट करते हुए। क्योंकि देखिए बाकी जो पार्टी थे वो डिविसिव बात कर रहे थे, कोई एक कास्ट की बात कर रहा था, कोई धर्म की बात कर रहा था, हम ही ने सबका साथ सबका विकास की बात किया। अभी देखिए दिग्विजय सिंह को मैं सुन रहा था, वो उसी नेगेटिव पॉलिटिक्स को और बढ़ा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कांग्रेस ही है जो रोक सकता है। रोक सकता मतलब क्या? बीजेपी को रोकना ये कोई एजेंडा हो सकता है क्या? आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं अच्छा इस देश के लिए? अगर आप भी तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, ये एजेंडा नहीं था। बीजेपी को रोकना है, ये कोई एजेंडा नहीं हो सकता ना। नहीं सुदेश जी, आपका भी तो मुक्त भारत हम इसलिए बोलते हैं कांग्रेस की बुराइयों के कारण। जी ठीक है, मैं आता हूं। हमारा नेगेटिव एजेंडा नहीं, कांग्रेस की उन बुराइयों के कारण, कांग्रेस के करप्शन के कारण। कांग्रेस ने जो 67 ईयर्स में 55 ईयर्स रूल किया है और उसके बाद कुछ भी देश को नहीं दिया, उसके कारण ठीक गबन किया, इसके कारण हम बोलते हैं कांग्रेस से कोई हमको दुश्मनी थोड़ी ना है जी। कांग्रेस अगर सुधर जाए, कांग्रेस विकास की बात करने लगे, कांग्रेस के पास जो स्टेट है वहां डेवलपमेंट करके दिखाए, तो लोग खुद ही कांग्रेस के साथ आएंगे जी। इस वक्त हमारे साथ आप रहे, मैं आता हूं आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंद्रशेखर पांडे भी जुड़ गए। चंद्रशेखर पांडे साहब, क्या हुआ? आप लोग तो बड़े जोशो खरोश के साथ में चुनाव मैदान में उतरे थे, कहा था कि युवाओं को ये साथ पसंद है उत्तर प्रदेश के, फिर कहां कमी रह गई? ये क्या इसको एक बड़ी आप हार मानते हैं कि नहीं?
ये हमारी देखिए पहली बात तो ये कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व चुनाव होता है और मैं पूरी जनता को और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग विजयी हुए उन सब लोगों को बधाई देता हूं और हमारे समाजवादी पार्टी के भी काफी लोग विजयी हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं। सभी जो भी लोग जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं और ये आज दिन भाजपा का है क्योंकि जनता ने अच्छा किया, क्या किया, हम उस जनता जनार्दन उस पर कोई कमेंट नहीं, जो उसने किया है, जो उन्होंने मैंडेट, एक शानदार मैंडेट दिया है, मैं उसके लिए जनता को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। अब हम मुद्दे पे आते हैं आपके। देखिए एक चीज है, ये जो विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये जनता की विजय नहीं बल्कि एक प्लानिंग की विजय है। एक जो ट्रेमेंडस तरीके से जो माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने प्लानिंग किया, देखिए उन्होंने बड़ा, आप इस चीज को, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बड़ा दौर देखा होगा, जो आप ध्यान दीजिएगा पहला, दूसरा, तीसरा दौर जो था, तीसरे दौर में इन्हें मालूम था कि अगर ध्रुवीकरण कोई तगड़ा हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनके पास में इनका अंडर करंट था। इन्होंने साइलेंटली जो कर पाया, ध्रुवीकरण को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जो हम लोगों का लक्ष्य था, हम विकास की बात कर रहे थे, जनता से अपने एक एक काम को बता रहे थे, जो हमारा समग्र विकास का लक्ष्य था कि एक तरफ गांव में जो हम जनेश्वर और लोहिया गांव के रूप में एक लगातार आदर्श ग्राम बना रहे थे, जो न्यूनतम में 55 ग्राम सभा से लेकर के और 225 ग्राम सभा एक एक विधानसभा में हम लगातार दे रहे थे, जिसमें आदर्श ग्राम बना रहे थे। वहां से एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो तक में लैपटॉप वितरण, गरीब को, अगर एक तरफ हम गरीब को उसको हम ये 500 रुपए महीने की समाजवादी पेंशन दे रहे थे, तो दूसरे तरफ हम व्यापारी की भी चंद्रशेखर पांडे साहब, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, लेकिन नतीजा ये रहा कि जनता ने आपका साथ नहीं दिया और खास करके जिन युवाओं को लुभाने की आप कोशिश कर रहे थे लैपटॉप के जरिए से या दूसरी चीजों से, वो नहीं हुआ। परंजय गुहा ठाकुरता साहब, ये चुनाव जो है डिमोनेटाइजेशन के बाद पहला एक तरह से जनमत संग्रह कह सकते हैं, और ये कहा जा रहा था कि साहब अगर इन चुनावों में खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो इसे माना जाएगा कि जनता ने विमुद्रीकरण को नकार दिया। लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं कि पंजाब को छोड़ करके जहां 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, आमतौर पर शायद ये मामला चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। क्या कहेंगे आप? कुर्बान जी, ये हमें मानना पड़ेगा, बहुत सारे लोग और उसमें मैं भी, हमने सोचा कि ये नोटबंदी के असर गरीब लोग के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो हर रोज जिसको पैसा मिलता है उनके ऊपर बुरी तरह लगेगा, और शायद उन्होंने गुस्सा में इस बार मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। मगर मैं कह रहा हूं आज कि ये ठीक नहीं था, क्योंकि हमारा सोच गलत था, क्योंकि हमें अब लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये नोटबंदी का मुद्दा एक तरह से अमीर और गरीब के बीच एक मुद्दा बना दिया कि कालाधन अमीर लोग के पास है और ये नोटबंदी गरीब लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि गरीब लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, आपको तकलीफ हुआ, आपको बैंकों के सामने, एटीएम के सामने घंटों पर आपको मेहनत करना, कतार में खड़ा होना पड़ा, आपका अपना पैसा निकालने में भी बहुत मुश्किल हुआ, फिर भी जो गरीब लोग आज भी सोचते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ये जो काला धन है जिसके पास, जो अमीर लोग के पास है, उनका तो नुकसान हुआ। तो इस तरीका से नोटबंदी का मुद्दा, मोदी जी अमीर गरीब एक तरह से जो श्रेणी, समाज की श्रेणी, क्लास युद्ध एक तरह से सफल हुई है। इसमें हमें लग रहा है, हमें याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी के समय, जिस समय इंदिरा गांधी ने नारा उठाया गरीबी हटाओ, तो इस तरह से आज मोदी जी और उमा भारती ये भी कहा कि आज सबसे बड़ा मार्क्सिस्ट है नरेंद्र मोदी, कार्ल मार्क्स से भी ज्यादा बड़ा मार्क्सिस्ट है नरेंद्र मोदी, मैंने नहीं, उमा भारती जी ने कहा। तो एक तरह से इस मुद्दा को इन्होंने अमीर और गरीब के बीच एक मुद्दा बना दिया और सफल भी हुई है, मैं मानता हूं। All right, if I could take this question, in fact, to Tom Vadagan, the Congress spokesperson, joining us as well. Tom, just now we heard Digvijay Singh, of course, saying that, you know, if at all anyone can beat the BJP, it is the Congress. If at all anyone can beat Modi, it is the Congress. Of course, the picture is completely different as what we are seeing. The only two states where you, of course, leading at the moment, the BJP is giving you a tough fight in Goa and Manipur, and we'll have to wait and see what eventually happens there. But, you know, taking, you know, the point from what Pranjay was saying here, that, you know, it seems now, it's pretty clear that the pro-poor slogan, which at least the Congress had, you know, that has been snatched away by Modi. Do you agree with that?
Well, both yes and no. But one thing I like to point out is demonetization, if it has worked in favor of Modi in Uttar Pradesh, what happened in Punjab? They're part of India. Now the point is the kind of messaging that has been done by Modi and company is actually, he's been a dream merchant. He has been selling a dream to states where there's been no BJP government earlier. So they've been able to sell this dream. They have been able to succeed. But the minute the dream tenure ends, then people are raising questions like what has happened in Goa. Though it may be a photo finish, but the fact that the Chief Minister himself has been defeated clearly indicates that you can't be dream merchants all the time. You have to deliver. Uttar Pradesh is a standing example where a dream has been sold, polarization has been sold. The whole concept of Vikas that they talk about is something, again, they have not established anything in terms of Vikas. But as to the question of demonetization, yes, I agree with the speaker who said he has sold a dream that this is a class war between the rich and the poor. He's been able to message it, but the reality will hit hard when the economic realities dawn on the people of Uttar Pradesh. They haven't gone into the micro issues involved. When the economy takes its hit, which is happening, and the situation emerges properly, Uttar Pradesh will realize what kind of a mistake they have made. So we'll have to wait and rest till such time as the economy is going to take a hit and people get affected. We have already a case of 35% unemployment, so you can't have a situation in Uttar Pradesh and you can't have that situation in Punjab. All right, that we'll wait and see. As you're saying, we'll wait and see what eventually happens. Is that dream that he is selling, if you're calling it a dream, which of course clearly has got the mandate, Mr. Lakhera, this dream, the Congress may like to call it a dream, but is this a different kind of an awakening that we are seeing, at least as far as UP is concerned? Because if you look at the vote share that has gone, Mayawati herself saying that it has stumped her. The amount of votes that the Muslims, of course, have given, seem to have given to the BJP, for that matter, even caste, for that matter, on every line possible, the BJP seems to have garnered votes. So is this really just a dream that he's selling? There are 2-3 factors of this whole result of today. First of all, Congress Party, it is a time for the Congress Party to have a serious thinking on this defeat, because Congress Party was trying its best to challenge demonetization of Narendra Modi. The second thing is Congress Party in the last moment went into an alliance with the Samajwadi Party, and Congress Party was raising the slogan 27 saal UP Behal. And they also projected Sheila ji as a Chief Minister candidate, and they also organized some rallies, Kisan rallies in the whole of the Uttar Pradesh. But what I feel is that they could not understand and feel, and they can't understand what is going on in the mind of the people, especially the youth. Third point of is Congress Party is about the Rahul Gandhi's leadership. I think this is a very serious thing, because what common perceptions in all over the country and within the Congress Party is Rahul Gandhi is taking the party as a part-time politics, whereas its opponent BJP, which is a full-fledged Prime Minister, round-the-clock thinking, having a complete whole of the network all over the country and tirelessly working. And the third thing is Narendra Modi did this wonder, this is the extension counter, the extension of the victory from 2014 to 2014 to 2017. So this is the extension of that victory. And Congress Party could not understand, Samajwadi Party could not understand, Mayawati could not understand, and they were sitting completely aloof from all these development they are happening across the Uttar Pradesh and Uttarakhand as well. What I feel. जी, बिलाल sabzwari साहब, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपका अखबार शाह टाइम्स भी उस इलाके में पढ़ा जाता है काफी। ये कहा जा रहा था, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, कि जाट नाराज हो गया है बीजेपी से और वो बड़ी तादाद में इस बार अजीत सिंह के साथ रैली राउंड कर रहा है, जो
ट्रेडिशनली करता रहा है। लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं हुआ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसानों की समस्या एक बड़ा मामला है, गन्ना किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आता और उसके उम्मीदवार लगातार जीत रहे। हालांकि उनके जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो पिछड़ रहे हैं। देखिए कुर्बान साहब, आप बहुत ठीक बात कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में असर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस चुनाव को पूरे डिफरेंट दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं इसमें कास्ट पोलराइजेशन, एक पर्टिकुलर ओबीसी वर्ग का जो पोलराइजेशन हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में हुआ, लेकिन वो ओबीसी वर्ग का पोलराइजेशन यादव के अगेंस्ट बीजेपी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि माइनस यादव ओबीसी ये फील करता है कि संपन्न वर्ग है, इनको ही जो कुछ मिला है हमेशा मिला, हमें नहीं मिला। इसी तरह माइनस जाटव जो दलित है उसका पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में हुआ, जाटव के अगेंस्ट हुआ है। और अपर कास्ट जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, ये कॉम्बिनेशन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है। रहा सवाल जाटों का, तो जाटों का जहां तक सवाल है, मुझे अच्छी तरह मालूम है और मैं चुनाव क्षेत्र में गया था। जाटों ने जितनी भी कोशिश की है, ज्यादा बोल उन्होंने अजीत सिंह को किया है, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ ओबीसी के अंदर ही यादव के अगेंस्ट पोलराइजेशन हुआ है और दलित समुदाय के अंदर ही जाटव के अगेंस्ट बीजेपी के पक्ष में पोलराइजेशन हुआ और अपर कास्ट के साथ था। इसी वजह से ये थंपिंग मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी। तो क्या वजह थी कि अजीत सिंह सिर्फ 2 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनके जाट के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, क्योंकि जाट दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनता है या जाट दलित का कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन टूट गया है उनका। तो जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद माहौल बना था और जिसका फायदा काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में हुआ था, आप समझते हैं कि वो अभी विभाजन बरकरार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं उसको पूरी तरह माइनस कर दूं ये भी नहीं मानता हूं। विभाजन है, मानसिक रूप से विभाजन है, जिसका सांप्रदायिक तड़का नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में लगाया और ये कास्ट पोलराइजेशन मिक्सअप होकर उसका इस तरह से रिजल्ट आया। ठीक। All right. Paranjay, if I could talk to you, because as far as UP is concerned, and we'll get to the other states, of course, in a bit. But, since UP is the big story here, the BSP, as far as the exit polls, of course, never showed her to be gaining anything, and that seems to have proven right if you look at the numbers. But, the reporters on the ground, the people on the ground, the sense was that Mayawati has been working hard for the past 2 years. She's in fact fielded the most amount of Muslim candidates, so she was very clear as far as the campaigning was concerned, as far as drawing boards concerned. But then somewhere down the line, is it the BJP or for that matter the Modi rally drone just kind of silenced her out? Okay, Tracy, clearly we all become more intelligent on hindsight. This was a sweep for Modi. This was a replication of what happened in the Lok Sabha elections in 2014, where the Bharatiya Janata Party got 42% of the vote and 73 with the Apna Dal out of the 80 Lok Sabha seats. This is a virtual replication of that. The difference is as follows. It's been almost 3 years down the line since the 2014 Lok Sabha election. But the very fact that Ms. Mayawati's opening statement should blame the electronic voting machine also indicates that she's been in a state of denial. She's seen how the Muslim vote has got fragmented completely between not just the Bahujan Samaj Party, but with the Samajwadi Party and the Congress. So even though Muslims account for almost a fifth of the total vote in Uttar Pradesh, it was clear the fragmentation helped the Bharatiya Janata Party. Second point, her style of operations, imperious. Yes. I think of all the important political leaders, her political future currently appears to be the most bleak at this juncture. Thirdly, clearly this Muslim Dalit alliance that you talk about did not work. So at one level, when we talk about identity politics, we talk about non-Yadav OBCs, we talk about non-Jatav Dalits, we talk about different the people who we're looking at quote-unquote vote banks. To some extent, the sweeping victory
of the Bharatiya Janata Party means that the BJP support has actually cut across all these so-called vote banks. So in a sense, we have to rethink the way we are looking at politics. And I think also the other point that is very, very clear, you see, it was only after the elections were over that the Akhilesh Yadav said that we want to keep the BJP out of power, so we'll even have a sort of tie-up with the Bahujan Samaj Party or Buaji. The point is, as Bihar has shown, unless all the non-BJP parties come together, and in this case, the Bahujan Samaj Party and the Samajwadi Party have been arch rivals, then they really didn't have a hope in challenging the BJP. One last point, Kurban. We know how today the political opponents of the Samajwadi Party utilized people, including people like Mr. Amar Singh, to really make life so difficult for Akhilesh Yadav. He may have emerged later on as the tallest leader, but by then the situation was in a mess. जी, मैं हम आते हैं आपके पास में और इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा हैं, उनको जानना है, वो जाएं इससे पहले पंजाब के बारे में सुदेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हो गया वहां, ये मैजिक क्यों नहीं चल पाया मोदी साहब का, और जैसा अभी टॉम वडक्कम कह रहे थे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए इस सवाल पे, तो वहां हार का क्या कारण रहा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कोई समीक्षा की है? देखिए, पहले तो ये बोलना कि पंजाब और उत्तर प्रदेश सेम है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन एनालिसिस, मुझे लगता है कि बहुत बड़े सच को झुटलाने का प्रयास हो रहा है। पंजाब के अगर ट्रेंड की आप बात करें तो आपको पता है कि पंजाब में शुरू से ही ऐसा रहा है, 2012 के चुनाव को हटा दीजिए कि एक पार्टी जीतती है दूसरी पार्टी आती है। अकालीस नहीं थी तो कांग्रेस आई, कांग्रेस को रिप्लेस करके अकालीस आई, सिर्फ 2012 में रिपीट हुई अकालीस, और उसके बाद डबल एंटी इनकम्बेंसी। तो हमें भी लग रहा था कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अकालीस ने बहुत अच्छा किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। और दूसरा बात, उत्तर प्रदेश जो है, असली चुनावी दंगल तो उत्तर प्रदेश में लड़ा गया, जो कंट्री के पैरामीटर को बदलता है, हम ये बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते थे, हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं और अपोजिशन के लोग भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के टर्म्स में एनालाइज करते हैं, लेकिन कभी एस्पिरेशन के टर्म में एनालाइज करने का प्रयास नहीं किया। और यूपी का जो चुनावी नतीजा निकला है वो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को बताता है। अगर बीजेपी को सारे तबके वोट दे रहे हैं तो वो उनके एस्पिरेशंस को बताता है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी एक नई जिंदगी दे, वो विकास जो उनको नहीं मिला है वो पहुंचाए, स्वच्छ जल पहुंचाए, स्वास्थ्य सेवा पहुंचाए, जिसके लिए हम खड़े हैं और इसलिए उन्होंने हमें वोट दिया है। हमें अपने दायित्व का बोझ है, इसको किसी भी तरह से आप एनालाइज करिए कि कोई क्या गुस्सा हो गया, कास्ट इधर चला गया, सारे कास्ट ने हमें वोट दिया है। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब फाइनल एनालिसिस आएगा कि मुस्लिम लोगों ने भी हमें वोट दिया है, जो आपको लगता है कि मुसलमान हमें वोट नहीं दिया होगा। जी, बहुत शुक्रिया सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां हमारी संवाददाता नविका मौजूद है। नविका, क्या खबर है देहरादून में, क्या नया सत्ता समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और कौन उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री होगा, इसके बारे में कुछ चर्चा शुरू हुई है? I will go to Navikram in just a bit, but going back to Mr. Tom Vadakan, Mr. Vadakan, of course in Punjab, that's a clear victory and we do have, a chief ministerial candidate there. But, talking about Uttarakhand, we do understand the Harish Rawat government was pretty confident that they would be winning there. What do you think went wrong? Well, if you examine it very closely, you'll find that there has been a charge of corruption, and that charge of corruption stuck under very strange circumstances, because the corrupt elements moved into the Bharatiya Janata Party, and the chief minister was labelled as a corrupt team. The real core corrupt people have actually moved into the Bharatiya Janata Party, and it is very unusual that chief minister is caught holding the baby. Now the point is, there has been issues. We were very confident of Uttarakhand, but the issue is that this business of backdoor entry, what all they went through, and they have been able to exercise that kind of charge that we are still corrupt, whereas
the team led by Bahuguna and party, the real culprits are in the Bharatiya Janata Party. We have been victims there. That is the reality. People have not been able to see through that that kind of perception that has been created. And would you say that's the case in Manipur as well? Of course, at the moment it's a neck-and-neck fight, but a lot of the BJP senior leaders there are from the Congress, whether you have Y. Irabot, you have Chauba as well, they're all from the Congress. Would you say that is the case, why the BJP is gaining a bit of strength in Manipur? I don't want to form a view when the counting process is still on and the final figures will be out. We will tell you the statistics based on, yes, Uttarakhand is a standing example of the kind of horse trading that has occurred and the kind of corrupt elements that have joined the Bharatiya Janata Party. They have been the reason for the downfall of the government in Uttarakhand, but now they are firmly and fixed in the Bharatiya Janata Party. We wish them all the way, best. लकीरा साहब, अभी बात हो रही थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में, और आप उत्तराखंड की राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि वहाँ ये सारे आरोप लगाए गए कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पे कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश की गई, अदालत में मामला गया और बाद में हरीश रावत साहब अपना बहुमत सिद्ध करने में भी कामयाब हो गए, लेकिन शायद जनता ने इसको पसंद नहीं किया। देखिए, वो सही रहने कि ना इधर उधर की बात कर ये बता के काफिला कर लूटा। मैं ये मानता हूं कि असम में जो कांग्रेस की डिफीट हुई वो कांग्रेस पार्टी ने उसको इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था कि असम में हम हार जाए। एक मुख्यमंत्री की जिदबाजी की वजह से पार्टी विभाजित होगी और असम के जो रेबल्स है, हमारे भी मित्र हैं वो लोग, वो दिल्ली आते थे, वो बाद में बीजेपी में भर्ती हो गए। हमको भी मिलते थे, कहते थे साहब ये मुख्यमंत्री को हटा नहीं रहे हैं और हम असंतुष्ट है। 6 महीने से राहुल गांधी के पास उनसे मिलने का टाइम नहीं था। उत्तराखंड के जो रेबल जो हरीश रावत के खिलाफ थे, हरीश रावत की कार्यशैली से नाराज थे, हरीश रावत को कहते थे कि आप मंत्रिमंडल में विस्तार करो, कुछ रद्दोबदल करो। वो एक पीडीएफ नाम का प्राणी जीवन तो वहां पैदा हुआ, वो उसने पूरा राज किया, एक तरफा राज किया और ब्लैकमेल किया। उसके बाद ये जो सिलसिला चलता रहा जिसमें विजय बहुगुणा एंड कंपनी, सतपाल महाराज तो पहले आ गए थे लोकसभा चुनाव के टाइम पर, हरक सिंह एंड कंपनी, ये सब लोग आए और इनको लीडरशिप की जो जज्बा होता है वो ये होता है कि आपके खिलाफ भी है, आप उनको लेके साथ लेके चलो और अपने पाले में रखो। वो क्या किया कि हरीश रावत एंड कंपनी ने ये कसम खा ली कि इनको पार्टी में नहीं रखना, ऐसे हालात पैदा कर दो कि ये पार्टी से बाहर चल जाए। और मुझे लग रहा है कि जो मास बेस्ड पार्टीज होती हैं, आपको उसमें उसको शिवजी की बारात लेके आज के हमारे सिस्टम में चलना पड़ेगा। हर तरह का लीडर और ये जो लीडर थे जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, ये कांग्रेस पार्टी के एसेट्स थे। मैं कह रहा हूं चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे हरक सिंह, और इनको आपने आइसोलेट करके इनका अपने क्षेत्र में 10, 12, 15 हजार वोट्स है। तीसरी आरोनी क्या है कि हरीश रावत के पास वो जमीनी नेता थे, बहुत अच्छे व्यवहार कुशल है, हमारे भी मित्र हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि 2002 में जब राज्य का गठन हुआ तो आज तक उत्तराखंड का प्रवेश, उत्तराखंड में किस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हिमालयी राज्य है, वहां के विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, कैसे पहाड़ी राज्य सुने हो रहे हैं, 3000 गांव खाली हो गए हैं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सारे सवाल एड्रेस करने के बजाय ये जितने मुख्यमंत्री वहां हुए हैं ज्यादातर इंक्लूडिंग हरीश रावत 3-4 किलोमीटर के रेडियस के नीचे घूमते रहे और सारी राजनीति उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और पहाड़ का पूरा आइसोलेशन हुआ। मुझे लग रहा है कि ये कंबाइंड जो इश्यूज हैं उनकी ये सारे कलेक्टिव हार है ये सारे इश्यूज की। और कांग्रेस पार्टी का वक्त है कि ये आत्मज्ञान भी प्राप्त करे और आत्म मंथन करे। ये मौका है इसका, इनको बताना चाहिए कि कैसे ये सब चीजें हुआ। दे आर देमसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर दैट। जी, इस वक्त हमारे संवाददाता नवविक्रम हमारे साथ जुड़ गए। नवविक्रम, क्या खबर है, देहरादून में नई सरकार बनने के लिए क्या कोशिशें शुरू हो गई हैं? आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज नवविक्रम? आप हमारे साथ हैं? All right, we don't seem to have Navvikram at the moment.
Bilal, if I could come to you, we're talking about the BJP win, we're talking about the charisma of Modi, and how, like you yourself pointed out, as far as the caste lines are concerned, they seem to have really worked it right, which of course the SP Congress and the BSP didn't seem to have any idea about, as Varanjoy as well has been saying. But can we attribute this victory only to the charisma of Modi, only to, the work that has been going on there, but also a big word really on Amit Shah and the election management, in a sense. If you look at from that point of view, Bharatiya Janata Party election management is fantastic, with showing result. So far as the Modi charisma concerned, no doubt about it, he's a very good orator, he's a good speaker, he knows how to handle the public psychology. But so far as the ground reality is concerned, I just told you the way Goa was talking about the demonetization, the poor people psychology also works against the richer. Like that, the well of Yadav Samaj, Samudaya, society, against that the OBC works that same psychology. That's why they polarize in favor of the Bharatiya Janata Party. I'm relating that same fundamental here. Like that Jatav, they are Sampan in the Uttar Pradesh, Yadav Samudaya, but minus Yadav Jatav, they polarize against the in favor of the Bharatiya Janata Party with the same psychology. What we were talking about the demonetization, that poor psychology always work against the richer against the richers. Yes. That we have got nothing. Like that the OBC Samudaya of the Uttar Pradesh is thinking with the psychology that everything Yadavs gets. Yes. Like that the Dalit was thinking everything, Jatav get, we get nothing. That's why they collectively polarize in favor of the Bharatiya Janata Party, and with the skills of with the skill of Narendra Modi, the way he speaks and election management, with the slight talk of the polarization are all are effects which makes Bharatiya Janata Party everything win. came together properly. Exactly, for the and BJP. that proposition was very fantastic, and that's why they got this clear victory. All right. इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं मणिपुर से। अखिलेश सुमन साहब, क्या खबर है मणिपुर में? अभी कुछ स्थिति साफ नजर आई आपको, क्योंकि मुकाबला बराबर का चल रहा है बताया जा रहा है। अखिलेश, आप सुन पा रहे हैं? मुकाबला बिल्कुल बराबर का चल रहा है। अभी ऑफिशियली जो अनाउंस, हाँ, हेलो हाँ जी गो अहेड अखिलेश। यस, ऑफिशियली 15 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 14 सीटें अभी बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास, लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस जो 7 सीटों पे कांग्रेस अभी आगे उसका ट्रेंड है और 3 सीटों पे बीजेपी अभी आगे चल रही है। All right, we'll try and fix that link in just a bit. There's a bit of a delay, and I think that's relating to the confusion there. Akhilesh, if I could come to you very clearly, yes, it's a neck-and-neck fight, but we have to give it to the BJP that they have really seeped into the vote share as far as Manipur is concerned, and they have been working hard. We of course have Ram Madhav and Hemanta Biswa Sarma, who've been working very hard for the past year, taking continuous rounds of Manipur and working across the valley and the hills as well to try and see where they can get that crucial vote share. The big question now, does it lie on the hands of the independents? Yeah, naturally. I was talking to BJP and they were smiling, and even they distributed seats. And then they were telling that if we need seats, it will be complemented by the independents and even the smaller parties. लगता है कि कुछ It is very clear, Tracy, actually, that Congress is having no ally at this point of time. कुछ तकनीकी खराबी की वजह से अखिलेश सुमन से हमारा संपर्क टूट जा रहा है बार बार। हम उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। परंतु गुवाहाटी साहब, अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की, तो वहाँ काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं अशांति है, अराजकता का सा माहौल है, ब्लॉकेड आए दिन चलता रहता है। प्रधानमंत्री जब गए थे वहाँ चुनाव प्रचार के लिए तो उन्होंने इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। मणिपुर और उसके साथ ही लगे राज्य नागालैंड,
में कुछ सूरत हाल इन दिनों ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद, वो चाहे जिस भी दल की हो, कुछ वहां पे शांति कायम हो पाएगी? मणिपुर का जो चुनावी नतीजा बहुत लोग को आश्चर्य कर दिया। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए, ज्यादा से ज्यादा जो उत्तर पूर्व राज्य है, वहां हम एक ट्रेंड देखते हैं कि जो भी सत्ता है दिल्ली में, वही पार्टी, वो मणिपुर कहिए, नागालैंड कहिए, अरुणाचल कहिए, ये सारे राज्य में जीत जाते हैं। एक तरह से जो भी आपका उस राज्य का जो राजनेता है, जो भी सत्ता में है दिल्ली में, उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ठीक है, अगर दिल्ली में जो भी राज्य जो भी सत्ता में है, अगर उनको हम समर्थन करें तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो इसलिए आज मैं थोड़ा बहुत तो आश्चर्य हूं कि कांग्रेस इतना अच्छा किया। इस समय बताएंगे कौन सरकार बनाएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अभी जितना नतीजा आया है, इरोम शर्मिला कुछ नहीं कर पाया। चुनाव का मैदान में पहला बार उन्होंने आया, उनके बारे में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। भूख हड़ताल इतना लंबा विश्व में किसी ने नहीं किया। फिर भी जब उन्होंने राजनीति में आया, हमें लग रहा है वो जैसे सोचा था कि हम आगे बढ़ पाएंगे, वो नहीं बढ़ पाया। That's right, because Irom Sharmila Pranjoy not only lost that Thoubal seat, which was of course a crucial one. I mean, you're contesting against a chief minister who's been there like since 2002, so that in itself was a big battle. But you know, even in the, let's say, even in the Thangmaipan seat, you've got Erundro, who's of course of the Praja Party, and he too has been defeated. So that is of course a big narrative as far as, you know, change is concerned in Manipur. It's obviously not as easy as we think, and you know, people like to stick to the familiar as far as governments there in the northeast, and for the matter, Manipur. No, Tracy, we are not expecting the Congress to do as well as it has. I was expecting, in fact, the BJP to do much better. I'm surprised, because I, being from Manipur, was quite confident in a sense that, you know, the narrative may probably be the same. I'm in fact excited in a sense, not that I'm a BJP supporter or a Congress supporter, but I'm excited that the BJP is in the picture for once. I mean, you know, this makes the situation there less predictable. Let's go to Akhilesh Suman, who's in fact there, and hopefully he's going to be able to hear us properly and give an answer. Akhilesh, you were talking about the fact that how the BJP is seeming confident, at least at this point of time, even though counting's still on. We're not declaring anything as far as Manipur is concerned. But you know, the independents, they may hold the key to perhaps us seeing maybe a BJP government. Yeah, naturally. That is what I was trying to tell you, that 46 seat has been counted, and 14 seats are yet to be counted. But whatever the configuration is coming, votes have been divided, not only between Congress and BJP, but also between various independent parties and smaller parties. So it is going to be very skewed differentiation of votes, and BJP in between hoping that it will get support of the independents and also some smaller parties like Naga People's Front and also National People's Party. And if it gets a MNDF, there is one MNDF, and there is a NJP. You know, the BJP alliance, NJP has one seat. LJP was demanding from BJP that give me one seat, and I will not put any candidate. But since BJP did not give any seat to the LJP, the sitting candidate, then LJP put 17 candidates in the state, and now they have got one seat that was sitting. So you can understand that had BJP worked in a bit more with a bit more wisdom, it could have much more easier than it is having now, because LJP must be denting some of the votes of BJP, because LJP is also on the wave of anti-incumbency against Mr. Yubobi Singh. So picture is coming to be very, very complicated at this point of time. Counting is going very slow in this state. 14 seats are yet to be counted, and we are asking again and again Chief Electoral Officer why this is so much late. So space is also a crunch here, because you cannot expand the counting stations like you can do it in Uttar Pradesh, because the areas are very sensitive. They are scared of any attack from any of the insurgent groups, though it has not happened till now. Yes. So it is being done in a very protected way, and I think that we will be expecting final result
not before 6 or 7 p.m. in the evening. Absolutely, absolutely. शुक्रिया अखिलेश सुमन साहब, हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। परंजो गुहा, हमने 4 राज्यों की बात की, हमने उत्तर प्रदेश की बात की, हमने पंजाब की बात की, हमने मणिपुर की बात की, हमने उत्तराखंड की बात की, लेकिन गोवा में भी स्थिति अभी बहुत कोई साफ तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे, गोवा में क्या कारण रहा? और काफी शोर सुनते थे कि अपने आप जो ये आम आदमी पार्टी है ये काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, जी। All right, go ahead, Paroj. We are of course showing the our viewers visuals, of course, of Amit Shah. Sure. I understand Amit Shah is soon going to be addressing a media conference, but you were talking about Goa. I think the Aam Aadmi Party were hopeful of at least registering a presence in Goa, but this time I don't think they've been successful. The party has not been successful. So it's once again, in a sense, it appears that if you ask me, the BJP together with its ally, the MGP, the Maharashtra Gomantak Party, may be able to cobble together a majority, but once again, it's early. I mean, one has to wait and watch. It seems the battle is pretty close over there too. All right, so let's get in a word, in fact, from Panjim as well. Our correspondent Ravinder Shoran joining us from there. Ravinder, what does it seem like? Just a short while we spoke to Akhilesh and the picture still not clear, of course, in Manipur. Does it seem that way in Goa still? Yeah, absolutely, Tracy. The picture is not very clear in Goa as well. Spine-chilling suspense is still going on. All the political parties and leaders are still crossing their fingers what is going to happen in this election. But very neck-to-neck fight. The latest trends which we are having right now is 12 seats. The Congress party is they win for and 11 seats the BJP is. But the Chief Minister of the Goa, Lakshmikant Parsekar, he has already lost his election. This is one of the biggest news in the Goa right now. But what is happening is the third front, the third front, which consists of Vijay Sardesai's Goa Forward Party, 3 independent candidates. One seat has already gone to the Goa Maharashtra Gomantak Party, and one is of Subhash Velinkar's front. These are the most important and key factors now whom these MLAs are going to support. Vijay Sardesai's Goa Forward Party was the party which the Congress was interested to forge an alliance before the elections, but they could not manage it because the local leadership here in the Goa, they were not interested to forge an alliance yet. The central leadership was quite interested to forge an alliance with the Vijay Sardesai's party, and I think now at this juncture of time, the decision of the Congress party is, it is quite evident that if they would have forged an alliance, it is a better situation. The party is, if it had already been done an alliance. But now Subhash Velinkar has already a couple of days back announced that he is going to join the RSS back. It means that he is going to support, if any candidate of his party will win, he is going to support the Saffron party back. Also, Maharashtra Gomantak Party, which was the alliance partner in the government, they are one other seat they are still ahead on. They are quite in this position that they can win 2 seats. The 2 seats, the people here are saying that they can also support the BJP party. But where the Vijay Sardesai's party, Goa Forward Party, will go, and where all the 3 independent candidates will go, they have the key to power now. And in this election, BJP party could contested only 36 of the seats. Yes. The Congress party could contest only 37 of the seats. Both the main political front, they supported 3 and 4 candidates respectively. If they will win, and how many of their absolutely, so the independents hold the key. All right, so the independents hold the key is what you are saying there, Ravi. Lakhera ji, if I could come to you, it's quite a loss of face. When the BJP chief minister there, I mean, you may be winning, or with the help of independents, we'll have to wait and see. But the very fact that the chief minister has lost his seat in Mandrem
that in itself is quite a big, loss of face. And, that's the situation. Even though we are seeing this big BJP wave, big BJP win, but it's solely based on Modi and perhaps Amit Shah or Rajnath Singh. But when it comes to local leadership, that is where the BJP is a bit weak, and that's something that has been exposed in Goa. Goa being a small state, only 40 seats are there, and BJP could not capitalize the anti-Congress sentiments there, or anti-BJP, and that was the you can say the big setback for the BJP's politics, because they shifted the Panikkar, who was the chief minister there, and the BJP central leadership are fully aware about this loss of face there. That's why in the last couple of days Mr. Panikkar camped there, and he was camping there, and he was convincing the voters and supporters of the BJP that once he can come down to Goa to take the reins of the chief ministership here. So because there is no proper strategy of the Congress party, and I think Aam Aadmi Party also did little bit bent in certain seats, which were the stronghold of the BJP. And all those, it is too early now, because there are 2-3 more important seats. Results are yet to, we should wait for the results so far, but this is certain now that BJP is not going to form the government, and this is a setback for the BJP itself, that they lost the face of the chief minister there. शुक्रिया लकीरा साहब, हमको जाना है ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले बिलाल सब्जवारी साहब, इन चुनावों के नतीजे आपकी नज़र में क्या संकेत देते हैं, और क्या 2019 के लिए किसी तरह का कोई संकेत मिलता है इन चुनावों से? देखिए, जहां तक 2019 के चुनाव का सवाल है, ये तो जाहिर है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी 2 स्टेट्स में बड़ी विक्ट्री हासिल हुई है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है। मोदी जिस चीज़ को फोकस कर रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट नहीं हुआ, वो जो उन पर दाग था वो धुला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण, आर्थिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर ने मिलकर जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये कहीं ना कहीं उनके मनोबल को उठाता है और विपक्ष को अपनी राजनीति की समीक्षा करने की एक तरफ चिंता को अग्रसर करता है। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इन विधानसभा चुनावों पर राज्यसभा टेलीविजन की इस खास पेशकश हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कम बने हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहार ठाकुरता भी हैं। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में।